Hello everyone, I welcome all of you in this class, and today we are going to continue the kingdom Protista. In particularly we are going to study about euglenoids. Well, so let us begin. The very first thing is, what are euglenoids, right? So wherever in biology there is this term, there is this suffix called oids, it means like. So euglenoids means euglena like. Okay, so it is this group is going to consist of the organisms which are euglena like, or you can say euglena and euglena like organisms. Okay, basically in this group the different type of euglena are placed. Okay, so basically we are going to study about euglena here. Okay, and this will be a generalized organism, or will be the common example for this group, as most of these organisms in this group will be somewhat like euglena. Great, so let us start. Now when we look at this group called euglenoids, what we find is it is a very small group. It is not a very large group, right? So it is a small group which is only consisted of about 36 genera, or you can say 36 genus, and in all these 36 genus there are only about 1000 organisms, or a little more than 1000 organisms. Okay, what we mean by saying this is, on this planet there are about more than 1000 types of euglena like organisms, or there are more than 1000 species which are either the species of euglena itself or euglena like organisms. Okay, in a very layman term we can say that there are about more than 1000 species of euglena, or there are more than 1000 different types of euglena present on our planet. Okay, great. Now when we look on euglenoids, we find that we also call them as spindle organisms or flagellated protist. Okay, now if we look at this term flagellated protist, again we call them protist because they are classified under the kingdom Protista, and flagellates because they bear flagella. Okay, again this means that all the euglenoids bear flagella. Okay, they all have flagella. Okay, and since they are flagellated protist, they are also called spindle organisms. Okay, because of their shape. Great. Now when we look at all these organisms, okay, more than 1000 of these organisms, their natural habitat is aquatic. So they all are what? Aquatic, and mostly they are freshwater. Mostly they are freshwater. Now remember, before this, the members of kingdom Protista that we have already covered, that is chrysophytes and the dinoflagellates, they were also aquatic, but they were mostly marine, right? So they were living in salty water. But euglenoids are mostly going to live in fresh water, preferably in stagnant fresh water. Okay, so when we say stagnant fresh water, we mean pond. Okay, it means that you will seldom find them in running water like rivers, okay, or streams. You won't find them in streams and rivers as in great number as you can find them in ponds. So they try to live in stagnant fresh water. So this does not mean that they only live in fresh water. Okay, they also live in marine water.
but only some species of Euglena are found in salty water or in marine ecosystem. Most of them are found in fresh water, and that too stagnant fresh water. ठीक है, याद रहेगा बेटा? Great. Now what we are going to see is we are going to study Euglena, okay, mainly Euglena viridis, as a model organism for this group. Okay, so what you are seeing here is the diagram for Euglena viridis. Okay, so let us study about it in detail, and this will cover most of the topics that we need to study in this group or about this group. Okay, now very first thing, if you pay close attention to it, what we find here is the entire body. Can you see? This entire body is elongated, and most of the Euglena or euglenoids have elongated body. Okay, and outside from the outer side of the body does not have any cell wall. Rather, they have another protective covering which is made up of protein, and this proteinaceous covering is called pellicle. प्लीज ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो भी यूग्लिनोइड्स हैं या यूग्लिना है उसके बाहर सेल वॉल नहीं होता है. इंस्टेड दे हैव an outer covering which is made up of protein called pellicle. है ना, बार बार आपसे पूछा जाता है कि पेलिकल कहाँ मिलता है, या यूग्लिना में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किस चीज का बना है, वो प्रोटीन का बना है, उसको क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं. क्या वो सेल वॉल है? नो, इट इज नॉट द सेल वॉल. नो, इट इज नॉट अ सेल वॉल. ओके, इट इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पेलिकल. ठीक है, प्लीज इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं. ग्रेट. नाउ once you try to get inside this organism, what you find is cell wall के अंदर again there will be cell membrane. ठीक है, तो यहाँ पे एक cell membrane होगा. So this is cell membrane. Can you see the next inner membrane? This is cell membrane. और जो cell membrane होता है ये again it is like any other cell membrane. Typically it is a plasma membrane. Okay, and this membrane is obviously eukaryotic, क्योंकि हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं. यहाँ पे सारे मेंबर्स क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं. तो यूग्लिनोइड्स भी क्या है? यूकैरियोटिक है. तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है. ठीक है, अगर ये यूकैरियोटिक है तो ऑब्वियसली इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? यूकैरियोटिक टाइप. So it will be having nuclear envelope which will be made up of two nuclear membranes, outer and inner. ठीक है, plus it will be having nucleolus. Correct. The DNA will be either in the form of chromatin fibers or in the form of chromosomes. Okay, and this folding takes place with the help of histone protein. So इनके न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा और न्यूक्लियोलस भी होगा. इन शॉर्ट ये जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा. और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये यूकैरियोटिक मेंबर हैं. ठीक है, and since these are eukaryotic cell, we are going to find different cell organelles such as, see, mitochondria, chloroplast. Okay, you will be having Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. So different cell organelles are present. ठीक. Now what we find here is these organisms have contractile vacuole. Okay, can you see this star shape organelle? Now this is called contractile vacuole. और जो contractile vacuole होता है इसका फंक्शन होता है osmoregulation में. ठीक है, इसके पहले हमने देखा था प्यूसूल था इन डाइनोफ्लैजिलेट्स. करेक्ट. नाउ यहाँ पे क्या है? contractile vacuole. ध्यान रखिएगा. Okay, great. Apart from this, what we are seeing here is there is chloroplast. Correct. Now अगर इस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट है,
it means it can do photosynthesis and it will be autotrophic in nature. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है. ग्रेट. इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमें देखना है. कैन यू सी एट द टॉप हियर, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो आपका पेलिकल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये ऐसे आया है और ऐसे आकर के यहाँ पे बेंड कर गया है. कैन यू सी, एंड देन फिर यहां से ऐसे निकल गया है. नाउ एट दिस पॉइंट ये जो ओपनिंग बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड साइटोस्टोम. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड साइटोस्टोम. इट इज लाइक माउथ, है ना. तो ये माउथ के जैसे है जहां से कि यूग्लिना खाना खा सकता है. ओके, लेट मी टेल यू कि यूग्लिना इज autotrophic as well as heterotrophic. So when it has light or when it is in an environment where light is present, तब तो इसके क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं and euglena shows the autotrophic nutrition. But when it is present in dark conditions, when where there is no light, then what happens? Euglena switches to heterotrophic nutrition just like animals. Okay. And through this mouth cytostome, okay, cyto मतलब cell, stoma means mouth, तो ये cell के mouth के जैसा है, और through this mouth it starts eating phytoplanktons or other small organisms smaller than euglena. Okay, और इसको यहाँ से खाएंगे, और खाने के बाद ये देखिए ये जो आपका एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड गलेट, है ना. ये गलेट का एरिया है, और अंदर में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड साइटोफैरिंक्स. ओके, ग्रेट. नाउ ये कैसे समझेंगे, याद कीजिएगा कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपने 10th में पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा देयर इज ओपनिंग कॉल्ड माउथ, and then there is buccal cavity, and then there is pharynx, and then there is gullet, and then esophagus through which the food finally goes or reaches the stomach, है ना. Similarly यहाँ पे देखिए, this is just a minute, let me, yeah, so think this red one as mouth. So this opening is like mouth, and then think this narrow passage as gullet, okay, and then this entire opening as pharynx. Okay, now you'll say why pharynx? Because after this the food will be packed into vacuole. Can you see here? Let me zoom in because some of you might not be able to see this. So see here. So it will be like, the red one will be like mouth, this will be like gullet, the violet one, and the blue one is cytopharynx, and from here the food will be packed into these food vacuoles and then taken into the cytoplasm. Okay, so can't you see it is just like animals mouth and gullet and pharynx. Okay, so this entire setup, this entire structure where you find mouth and pharynx, this is a character of animals. Okay, and this is a very primitive type, but it is found in euglenoids. So these are some animal characters. Heterotrophic nutrition with mouth and pharynx, these all are animal characters, and this is what we find in amoeba, sorry, in case of euglenoids. Okay, great. So this is all different structures that we find in euglenoids. Now apart from this we also find some unique things, okay, and these are flagella and paraflagellar apparatus. Okay, now see here again, if you look closely, what you find here is a flagella. Can you see? There is a flagellum. Now when you look at euglena, you find a single flagellum. Okay, at first instance when you see them you find a single flagellum, and this flagellum has two
rows of hairs on them, है ना। तो इस फ्लैजलम पे क्या है, ये फ्लैजला स्मूथ नहीं है, ओके, बल्कि इसके ऊपर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हैं, छोटे छोटे हेयर्स लगे हैं, और ये हेयर्स 2 रोज में लगे हैं। कैन यू सी, मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ठीक है। सो देयर आर हेयर्स इन 2 रोज, और ऐसा फ्लैजला जो कि स्मूथ नहीं है, जिसपे 2 रोज या 3 रोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं टिंसल फ्लैजला। क्या बोलते हैं? टिंसल फ्लैजला, ओके। So this is tinsel flagellum, okay. Now, when you go inside the cytopharynx, okay, what you find is कि यहाँ पे एक की जगह पे 2 फ्लैजलम है। Can you see? This is one and this is another. तो एक्चुअली जो यूग्लिना होते हैं उनमें 2 फ्लैजलम होते हैं, और दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है छोटा फ्लैजला और दूसरा होता है बड़ा फ्लैजला। जो छोटा फ्लैजला है लाइक दिस वन, okay, now this flagella is smooth, this flagella is smooth and smaller in size and inactive, ये कुछ काम नहीं करता है, जबकि जो बड़ा फ्लैजला है वो एक्टिव है, ओके, एंड इट इज टेंसेल। यानी कि यूग्लिना में 2 फ्लैजला हैं और दोनों जो है वो बराबर नहीं है, मींस दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। इसका मतलब जो फ्लैजला है यूग्लिनॉइड में, इट इज नॉट आइसोकॉन्ट बट इट इज हेटेरोकॉन्ट, ये डिफरेंट है, ओके। सो यूग्लिना हैव अ पेयर ऑफ फ्लैजला and they are not same, that is they have heterocont flagella, out of which one is smaller, smooth and inactive, while the other is large, thick and tinsel type. समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, इस फ्लैजला, द फ्लैजला originates from a structure called basal body, ठीक है। तो फ्लैजला के रूट पे क्या होगा? बेसल बॉडी होगा, और ये जो बेसल बॉडी है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सेंट्रियोल, ओके। वन मोर थिंग, दिस इज द फ्लैजला ऑफ यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बैक्टीरियल फ्लैजला के जैसा नहीं होगा जो कि हमने किंगडम मोनेरा में देखा था। रादर दिस फ्लैजला इज मेड अप ऑफ tubuline protein and it has 9+2 arrangement of microtubules, है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग द चैप्टर सेल पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजलम, ओके, यूकैरियोटिक फ्लैजलम। यहाँ पे आप सिर्फ याद रखिए कि ये जो फ्लैजला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजला है और इसका अरेंजमेंट कैसा है? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये किसका बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। ग्रेट, अभी हम लोग देखेंगे ये सब कुछ नीचे में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन यू लुक एट दिस होल असेंबली ऑफ फ्लैजेला, देयर इज समथिंग कॉल्ड फोटोरिसेप्टर्स, ओके। तो यहाँ पे जंक्शन पे क्या है? एक फोटोरिसेप्टर है, और फोटोरिसेप्टर के पास ही गलट में लगा हुआ एक और चीज है जिसको हम बोल रहे हैं स्टिग्मा या आई स्पॉट, ओके। नाउ स्टिग्मा और आई स्पॉट इज इन क्लोज विसिनिटी विद दिस फोटोरिसेप्टर, ओके। और ये दोनों यानी कि स्टिग्मा एंड फोटोरिसेप्टर दोनों साथ में मिलकर के क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू सेंस द लाइट, है ना। दे आर गोइंग टू सेंस लाइट, और ये लाइट को सेंस करके यूग्लिना को बताते हैं कि कहां से लाइट आ रही है, ओके। ये सिर्फ बताते हैं कि लाइट कहां से आ रही है। दे कैन ओनली सेंस द लाइट इंटेंसिटी, दे कैन नॉट फॉर्म द इमेज, जिसकी वजह से यूग्लिना जो है वो किसी चीज को देख नहीं सकता, बट हाँ उसको पता चल सकता है कि लाइट किधर से आ रही है, एंड देन इट स्टार्ट्स स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला टुवर्ड्स द लाइट। ये लाइट की तरफ जाना चाहता है सो दैट ज्यादा लाइट मिलेगी इसको, एंड इट कैन बी एबल टू डू मोर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? सो व्हाट यू हैव सीन हियर इज अ डायग्राम ऑफ यूग्लिना विरिडिस। हम लोग आगे चल के देखते हैं एक एक करके कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, या इनके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
ग्रेट। तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन ठीक है फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और एक बार देखेंगे। सबसे पहली चीज हमने बात की थी किसकी, सेल वॉल की, और हमने बोला था सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट। और सेल वॉल एब्सेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, नो, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोटीनेसियस एनवेलप, और इसको टर्म इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेलिकल। ओके। सेकेंडली हमने बात की थी फ्लैजिला की, बोला था कि यहाँ पे दो फ्लैजिला हैं, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज हेटेरोकॉन्ड फ्लैजिला, राइट। पहला फ्लैजिला शॉर्टर है और दूसरा लॉन्गर है। द लॉन्गर फ्लैजिला हैज 2 row of hairs and such flagella is called tensile flagella, राइट। सो यहाँ पे एक टेंसिल है और एक स्मूथ फ्लैजिला है। ग्रेट। नाउ जो दोनों फ्लैजिला है, बोथ फ्लैजिलर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द बेसल ग्रेन्यूल या बेसल बॉडी एंड पाराफ्लैजिलर बॉडी, ठीक है। अब बेसल ग्रेन्यूल आपने देखा वहां पे छोटे से हैं जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होते हैं, और पाराफ्लैजिलर बॉडी इंक्लूड्स द बेसल बॉडी एज वेल एज द आई स्पॉट एंड द फोटोरिसेप्टर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, बेसल बॉडी and the flagellum forms the paraflagellar body, ठीक है, and basal body originates from centriole। अब देखिए, so in order to control this movement of flagella, you have paraflagellar body which also includes the eye spot and the photoreceptors। तो ये होते क्या है, ये देखिए, ये जो आई स्पॉट एंड फोटोरिसेप्टर्स हैं, these have special pigment called एस्टोजैंथीन, याद रखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजैंथीन जो कैसा अपीयर करता है, रेड कलर का, ग्रेट। तो these euglena have eye spot or photoreceptor which is present near the gullet। कहाँ प्रेजेंट है, गलेट में, गलेट में, ठीक है। और इसमें ये रेड कलर का छोटा सा डॉट है, डॉट जैसा स्ट्रक्चर है, विच इज रेड बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट कॉल्ड एस्ट्रोजैंथीन। और ये जो पिगमेंट है तो ये क्या करेगा, लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, है ना, एंड एब्सॉर्ब करके ये सिग्नल करता है टू द पैराफ्लैजिलर apparatus फॉर द मूवमेंट, है ना। Actually, it is a kind of very primitive eye which cannot form the image but can sense the light, ठीक है। तो ये एक तरह का primitive sensory system है, ठीक है। It can sense the light लेकिन no image formation, ये हमेशा याद रखिएगा, यूग्लिना देख नहीं सकता। It has eye spot but it cannot see because this eye spot is primitive, okay। It can only sense light। Now, this light sensing helps the euglena to determine where the intensity of light is more and where is less, ठीक है। और हमेशा जो euglena है वो अपने फ्लैजिलम के हेल्प से लो लाइट इंटेंसिटी से हाई लाइट इंटेंसिटी के एरिया में क्या करता है, प्रोपेल करता है या मूव करता है। सो ये जो टोटल आपका पैराफ्लैजिलर apparatus है या फिर जो आपका फोटोरिसेप्टर एंड स्टिग्मा है, इट इज हेल्पिंग द यूग्लिना टू गाइड टुवर्ड्स लाइट। ये गाइड कर रहा है, फ्लैजिलम के हेल्प से वो वहां पे मूव करेगा, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज अ प्रिमिटिव सेंसरी सिस्टम एंड इट इज द एनिमल लाइक फीचर, ऑब्वियसली, है ना। प्लांट्स में सेंसरी सिस्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ऐसे फोटो रिसेप्टर्स, सॉरी फोटो सेंसरी सिस्टम्स नहीं होते हैं। दिस इज अ एनिमल कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एनिमल कैरेक्टर है और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, प्लांट कैरेक्टर है। तो आपको यूग्लिना में दोनों तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। इसके बारे में अगेन हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर हमने क्या देखा था, वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं यूग्लिना के अंदर which helps in osmoregulation, okay, and then we also saw that it has a eukaryotic nucleus with a well defined nucleus having distinct nucleolus, it has nuclear membrane, it has histone protein and everything, so it is a complete eukaryotic cell, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि जो यूग्लिना है इसमें हमें प्लांट और एनिमल दोनों जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, that's why
the euglena or euglenoids are considered as connecting link between plants and animals. This is very 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 important. याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को कि euglena is the connecting link between plants and animals. ऐसा क्यों है? Because euglena have both the characters, animal character as well as plant characters. ठीक है? अब देखिए animal characters क्या क्या है इसके पास. If we are talking of animal characters, they have mouth, they have pharynx, they do not have cell wall, they have heterotrophic nutrition, they have sensory system. Right? ये सब क्या है? These all animal characters. Plant characters, they have chloroplast, they are autotrophic, they show autotrophic mode of nutrition. ठीक है? ये क्या है? Plant characters है. तो जो आपका यूग्लिना है, इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट कैरेक्टर भी और एनिमल कैरेक्टर भी, एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है? नाउ इसके पहले भी मैंने आपसे बात की थी, मैंने बोला था कि जो यूग्लिना है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट डज फोटोसिंथेसिस एंड बिहेव एज एन ऑटोट्रॉफ. लेकिन जब लाइट नहीं होती है, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन डार्क, इट स्टार्ट शोइंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. करेक्ट? तो अगर हम न्यूट्रिशनली बात करें तो जो यूग्लिना है, दे आर बोथ ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफ. और ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है? तो जो यूग्लिना है, यूग्लिनॉइड्स हैं, दे शो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है? Now, when they are mixotrophic nutrition, they are doing photosynthesis. They are using some of the food synthesized and storing rest of it. ठीक है? और ये जब स्टोर करते हैं तो अगेन जो कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर करते हैं एज अ ग्रैन्यूल, और इस ग्रैन्यूल को हम बोलते हैं पारा एमाइलम बॉडी. क्या बोलते हैं? पारा एमाइलम बॉडी. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? Now, this para-amylum body is nothing but granule of carbohydrate. है ना? स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है साइटोप्लाज्म में. और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा-1,3 ग्लाइकन. ठीक है? तो जो यूग्लिना में स्टोर्ड फूड होता है वो क्या है? बीटा-1,3 ग्लाइकन, जिसको कि हम पारामाइलॉन भी कहते हैं. अगेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा. ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द स्टोर्ड फूड is beta-1,3 glycan or paramylon, and these granules of paramylon are called para-amylum body. Okay, what is this? This is a stored food or food granule inside the euglena. ठीक है? Great. Secondly, हमने बात किया था कि in dark they behave as animals, they do heterotrophic nutrition. है ना? छोटे ऑर्गेनिजम्स को अपने फ्लैजेला की हेल्प से कैप्चर करते हैं और खा जाते हैं. कैसे? they eat through साइटोस्टोम. है ना? मुंह में डाला, फिर वहां से गलेट, वहां से साइटोफैरिंक्स, और फाइनली वो आपके फूड वैक्यूल में चला जाता है. एंड देन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इसमें. कैसा होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ओके? ठीक है? So this is most of the thing about euglena. Okay? Now euglena के बारे में और कुछ अगर हम देखें तो हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की इसके. है ना? तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो these are aerobes. ये क्या है? They are aerobes. It means they require oxygen. Okay? And secondly, अगर हम बात करें कि इसमें gaseous exchange कैसे होगा? Gaseous exchange होगा through general body surface. ओके? सिमिलरली अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी किससे होगा? जनरल बॉडी सरफेस. ओके? ग्रेट. नाउ इफ वी टॉक ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो यूग्लिना है, दे आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एंड लाइक एनी other simple organism, euglena also mainly reproduce through asexual method. है ना? तो mainly reproduce by asexual method. और उसमें भी किससे?
longitudinal binary fission. ठीक है, again very important. So the the euglena mainly reproduce through asexual reproduction called longitudinal binary fission in favorable conditions, है ना। तो जब भी favorable condition है यूग्लिना mainly divide करेगा through binary fission, और यहाँ पे जो fission है वो horizontal नहीं होकर के क्या होता है, vertical होता है, along the axis of the body होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं longitudinal binary fission। याद रखिएगा, longitudinal binary fission is not the common binary fission, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो फिशंस होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं या ट्रांसवर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो बाइनरी फिजन होता है दैट इज अलोंग देयर एक्सेस, अलोंग द लेंथ ऑफ देयर बॉडी, एंड सच binary fission is called longitudinal binary fission, which what we see in euglena। इसलिए ये important है, आप इसको याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है अगेन कि यूग्लिना में किस तरह का बाइनरी फिजन होता है। इट इज longitudinal binary fission। Now you can see the same through this figure. This is euglena, and now first thing is the euglena doubled its nuclear content, okay, almost double its cytoplasm and everything. Now the euglena starts to split from this plane. Can you see this plane? Now this plane is along the length of the euglena, along the body axis of the euglena, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, longitudinal binary fission। बार बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, it means it is important, ठीक है। ग्रेट। सो जो यूग्लिना है वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन से करते हैं इन फेवरेबल कंडीशन। इन एडवर्स कंडीशन, जब कंडीशन ठीक नहीं है, है ना, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंडीशंस ठीक नहीं है, तब वो क्या करते हैं, दे फॉर्म सिस्ट, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म सिस्ट, ठीक है। नाउ as I told you there are 36 genera, है ना, यानी कि 36 genus of euglenoids, ओके। इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जीनस है, एक ऐसे मेंबर हैं जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे डू नॉट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट ऑल, ठीक है। They will either divide through longitudinal binary fission in favorable condition or through cyst formation in adverse condition. But there is one such member of this family which shows sexual reproduction, and this is Euglena sanguinea। और ये अगेन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। However, अगर आपसे नॉर्मल एक क्वेश्चन हो कि यूग्लिना shows only asexual or sexual reproduction, you write asexual reproduction, okay? अगर पूछा जाए क्या always it does, तब बोलिएगा no, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा मेंबर है जो कि sexual reproduction करता है, and this member is Euglena sanguinea, okay? So this is all about Euglena and euglenoids. Great. With this, this is all about this lecture. In next lecture we will study about slime worlds, okay? So till then, take care, stay tuned, see you in the next lecture. Thank you.